हम लोग क्वेश्चन 134 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 134 क्या पूछे ये लोग? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रेनल वेजोडाइलेटर एक्सेप्ट रेनल वेजोडाइलेटर आर ऑल एक्सेप्ट ऑप्शन 1 डोपामीन, ऑप्शन 1 डोपामीन, ऑप्शन 2 ACH, ऑप्शन 2 ACH, ऑप्शन 3 हाई प्रोटीन डाइट, ऑप्शन 3 हाई प्रोटीन डाइट, या ऑप्शन 4 प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑप्शन 4 प्रोस्टाग्लैंडिन। रेनल वेजोडाइलेटर आर ऑल एक्सेप्ट डोपामीन, ACH, हाई प्रोटीन डाइट या प्रोस्टाग्लैंडिन। एंड द राइट आंसर इज डी, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन रेनल वेजोडाइलेटर नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 क्या पूछ रहे हैं? फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हेन रेनल सिंपैथेटिक नर्व्स आर स्टिमुलेटेड इज फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑन रेनल सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन ऑन रेनल सिंपैथेटिक नर्व स्टिम्युलेशन क्या होती है? फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑन द रेनल सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन इज ऑप्शन 1 increase sensitivity of the JGA, increase sensitivity of JGA, option 2 increase renin secretion, increase renin secretion, option 3 increase sodium reabsorption, increase sodium reabsorption, या option 4 renal vasoconstriction, रेनल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। फिर से देखिए, फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑन रेनल सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन इज इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ JGA, इंक्रीज रेनिन सिक्रेशन, इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन या रेनल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। एंड द राइट आंसर इज ए, दैट इज इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ JGA। फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑन रेनल सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन इज इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ JGA। क्वेश्चन 136 देखेंगे। क्वेश्चन 136 Which of the following cause a large reduction in GFR? तो large reduction in GFR caused by option 1 decrease in MAV from 100 to 90 mm of Hg, decrease mean arterial pressure from 100 to 90 mm Hg, 100 to 90 mmHg, option 2 decrease plasma oncotic pressure to half, decrease plasma oncotic pressure to half. Number 3 decrease in sympathetic activity, decrease sympathetic activity, option 4 complete urethral obstruction, complete urethral obstruction। फिर से देखिए, large decrease in GFR is caused by decrease mean arterial pressure from 100 to 90 mm Hg, decrease plasma oncotic pressure to half, decrease sympathetic activity या complete urethral obstruction। and the right answer is D, complete urethral obstruction। ठीक है, कंप्लीट यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन पे लार्ज डिक्रीज इन GFR होती है। कंप्लीट यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन में लार्ज डिक्रीज इन GFR होती है। क्वेश्चन 137 देखेंगे। क्वेश्चन 137 क्या पूछ रहे हैं? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है ना, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय ऑप्शन 1 इंक्रीजिंग रेनल ब्लड फ्लो, option 2 increasing afferent arterial resistance, option 3 increasing afferent arteriolar resistance, option 4 increasing plasma oncotic pressure, जैसे देखिए, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेनल ब्लड फ्लो,
increasing afferent arteriolar resistance, increasing afferent arteriolar resistance, increasing plasma oncotic pressure. And the right answer is B. That is increasing afferent arteriolar resistance. Increasing afferent arteriolar resistance. क्वेश्चन 138 देखेंगे. क्वेश्चन 138 पूछ रहे हैं which of the following has the greatest renal clearance. तो greatest renal clearance is for greatest renal clearance is for option 1 inulin, option 2 sodium, option 2 sodium, option 3 creatinine, option 3 creatinine, या option 4 glucose, option 4 glucose. Greatest renal clearance is for inulin, sodium, creatinine, या glucose. And the right answer is C. It is creatinine. Greatest renal clearance is for creatinine. क्वेश्चन 139 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 139 क्या पूछ रहे हैं? The renal plasma flow of a patient was estimated through the measurement of pH clearance. The technician observed the procedure correctly, but due to an error in the weighing, inadvertently used thrice the recommended dose of pH. RPF is. ठीक है, तो renal plasma flow estimated by pH clearance is estimated by pH clearance in a patient. ठीक है ना? And he used 3 times the dose of pH. Used 3 times more pH. ठीक है ना? Then RPF will be, renal plasma flow will be option 1 falsely high, option 2 falsely low, option 3 falsely high or low depending on the GFR, falsely high or low depending on GFR. Yeah, option 4 correct and unaffected by the dose of pH. Correct and unaffected by pH dose. फिर से क्वेश्चन देखिए. Renal plasma flow estimated by pH clearance in a patient where we use 3 times the more of pH. What will happen to RPF? Falsely high, falsely low, falsly high or low depending on GFR, या correct and unaffected by pH dose. And the right answer is B. B वो तो falsely low वैल्यू मिलेगी. ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे. क्वेश्चन 140 पूछ रहे हैं maximum absorption of sodium chloride in PCT occur due to effect of. Maximum absorption of sodium chloride in PCT occur due to effect of. Occur due to effect of. Option 1 ADH. Option 1 ADH. Option 2 aldosterone. Option 2 aldosterone. Option 3 ANP. Option 3 ANP. Yeah, option 4 angiotensin 2. Option 4 angiotensin 2. फिर से देखिए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन PCT occur due to effect of ADH, aldosterone, ANP, angiotensin 2. And the right answer is D, angiotensin 2. The right answer is D, angiotensin 2. क्वेश्चन 141 देखेंगे. क्वेश्चन 141 देखेंगे. The tubuloglomerular feedback is mediated by. Tubuloglomerular feedback mediated by tubuloglomerular feedback mediated by. Option 1 sensing sodium concentration macular densa. Sensing
sodium concentration in macula densa. Sensing sodium concentration in macula densa. Option 2, sensing chloride concentration in macula densa. Sensing chloride concentration in macula densa. Option 3, sensing sodium chloride concentration in macula densa. Sensing sodium chloride concentration in macula densa. Option 4, opening up of voltage gated sodium channel in afferent arteriole. Opening of voltage gated sodium channel in afferent arteriole. Physical tubuloglomerator feedback is mediated by sensing sodium concentration in macula densa, sensing chloride concentration in macula densa, sensing sodium chloride concentration in macula densa, opening of voltage gated sodium channel in afferent arteriole. And the right answer is C. That is sensing sodium chloride concentration in macula densa. The right answer is C. That is sensing sodium chloride concentration in macula densa. Question number 142 देखेंगे. Question 142, minimum reabsorption of kidney occurs for. Minimum reabsorption in kidney occur for option 1 urea, option 1 urea, option 2 glucose, option 2 glucose, option 3 sodium, option 3 sodium, या ऑप्शन 4 बाइकार्बोनेट, ऑप्शन 4 बाइकार्बोनेट. फिर से देखिए, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी ऑकर फॉर यूरिया, ग्लूकोज, सोडियम या बाइकार्बोनेट. एंड द राइट आंसर इज ए, यूरिया. मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी ऑकर्स फॉर यूरिया. क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 143 क्या पूछ रहे हैं? ANP एक्ट्स ऑन. ANP एक्ट्स ऑन. ANP एक्ट्स ऑन. ऑप्शन 1 PCT, option 1 PCT, option 2 DCT, option 2 DCT, option 3 collecting duct, option 3 collecting duct, या option 4 loop of Henle, option 4 loop of Henle. ANP acts on PCT, DCT, collecting duct या loop of Henle. And the right answer is C, that is collecting duct. ANP acts on the collecting duct. ठीक है ना, ANP acts on the collecting duct. क्वेश्चन नंबर 144 दिखाएंगे. Question number 144. All of the following cause natriuresis except. Natriuresis caused by all except. Natriuresis caused by all except. Option 1 angiotensin. Option 1 angiotensin. Option 2 PGE2. Option 2 PGE2. Option 3 endothelin. Option 3 endothelin. Option 4 interleukin 1. Option 4 interleukin 1. Option 5 ANP. Option 5 ANP. Which again natriuresis caused by all except angiotensin, PGE2, endothelin, interleukin 1 या ANP. And the right answer is A. The right answer is A, that is angiotensin. The right answer is angiotensin. क्वेश्चन 145 देखिए. क्वेश्चन नंबर 145 क्या पूछ रहे हैं? Which of the following is permeable to urea? Permeable to urea. Permeable to urea कौन सी होती है? ऑप्शन 1 TAL, thick ascending loop of Henle. Thick ascending loop of Henle. Option 2 cortical collecting duct. Cortical collecting duct. Option 3 outer medullary collecting duct. Outer medullary collecting duct. Option 4 inner medullary collecting duct. Inner medullary collecting duct.
permeable to urea is thick ascending loop of Henle, cortical collecting duct, outer midray collecting duct, inner midray collecting duct. And the right answer is D, that is inner midray collecting duct. Inner midray collecting duct is permeable to urea. आज के लिए इतना ही, थैंक यू.